में विरोध प्रदर्शन हुए, एंटी इमिग्रेशन विरोध प्रदर्शन हुए। हमारे जो उच्चायोग वहाँ हैं और हमारे जो कौंसुलावास, कई एक कौंसुलावास जो ऑस्ट्रेलिया में है, इस मुद्दे पर, इस मसले पर वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के भारतीय समुदाय के साथ इस पर संपर्क बनाए रखा है उन्होंने। और प्रोटेस्ट जब विरोध प्रदर्शन हुआ उससे पहले भी जो उनसे जो साझा किया गया चिंताएं हमारे समाज की, वो ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने में हम लोगों ने रखा। हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से जवाब आया कि वो मानते हैं कि ये चिंताएं, ये प्रोटेस्ट को लेके, विरोध प्रदर्शन को लेके जो चिंताएं हैं वहाँ के अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए वो एक मसला है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे राजनेतागण, साथ ही में जो सीनियर लीडर्स हैं दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उन्होंने कई एक स्टेटमेंट जारी किया है, ये कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल समाज है और उसमें हर पक्ष का, हर समुदाय का योगदान है। उन्होंने भारतीय समुदाय की जो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको उन्हें सराहा और साथ ही में उसको स्वीकार भी किया है। हमारे तरफ से ये मानना है कि विविधता हमारे समाज का और किसी भी समाज का एक स्ट्रेंथ होता है, एक उसको मजबूती प्रदान करता है। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के साझेदारी का सवाल है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इसको हम और मजबूत करना चाहते हैं और इसमें जो दोनों देशों के बीच में जो गठजोड़ है लोगों के बीच में, वो इसको मजबूती प्रदान करता है। भारत सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है कि भारतीय नागरिक और भारतीय समुदाय जो बाहर रहते हैं उनके कल्याण के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध है और काम करता रहेगा। अभी के जो विरोध प्रदर्शन हुए ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हम वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के समुदाय के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। मधु, ऑन इंडिया भारत चीन के बातचीत के बारे में, देखिए भारत और चीन के रिश्तों में कई एक, अभी आपने देखा होगा, कई एक मुलाकातें हुई हैं, लीडर लेवल पे हुई है। तियानजिन में माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। मुलाकात के बाद हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और काफ़ी डिटेल्ड में प्रेस विज्ञप्ति, उसमें हर मुद्दों पर बात रखी गई है। और जैसा कि उस प्रेस विज्ञप्ति में आप देखेंगे कि हम लोगों ने दोनों नेताओं ने इस बात का स्वागत किया है कि इस रिश्ते में एक पॉजिटिव मोमेंटम और स्टडी प्रोग्रेस बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आपका नज़र इस प्रेस विज्ञप्ति पे आप लाएं ताकि और भी जो डिटेल में हम लोगों ने बातें रखी हैं उसको आप बेहतर समझ पाएंगे। प्रणय, पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro and obviously we reject them. As far as India-United States relations are concerned, प्रणय, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हैं हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं। दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। Sorry. We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. As you would have seen, प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और
डेलीगेशन एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले, तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। Yashi, your question regarding the statements that were made by Nepal on the border issue. On 20th August, if I recollect correctly, we had issued a statement clearly stating what our position is, and I would therefore like to draw your attention to a statement. Can we move forward? Shivam? Thank you, sir. This is Shivam Patel from Reuters News. I had a query about the SEO summit in Tianjin. In the joint statement, there's a mention that interested parties agreed to establish an SEO development bank. Is India one of the interested parties? Could you also shed some light on the mandate of this bank? And is the ultimate goal the creation of an independent financial system? Thank you. Yeshi? This is Yeshi Seli from Business India. Commerce Minister Piyush Goyal just 2 days back had said that the bilateral trade agreement is likely to happen and negotiations are going on. In that context, given that background, President Trump's statement, is that going to be a spanner in the works? And secondly, are we going to be optimistic of having a Quad summit this year? And can I have if you permit, can I ask another question? A lot of countries are reaching out to India to intervene end the conflict in Ukraine. Is there something that India is going to do, considering the fact that we are close to Russia as well? उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल ये है कि कल ईयू की तरफ से 2 बयान आए जिसमें ये कहा गया कि भारत का रोल काफ़ी अहम है यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत कोई एक्टिव रोल प्ले कर रहा है? बयान तो भारत की तरफ से लगातार आ रहे हैं कि युद्ध का काल नहीं है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई एक्टिव रोल भारत की तरफ से निभाया जा रहा है? अजय? So good afternoon, Ajay Banerjee from the Tribune this side. Though you have answered what Donald Trump has said, you have answered to that, I'm not on that. But Trump has mentioned that India has been lost to China. Are you comfortable with this clubbing with China? Okay. Sandra? Could you perhaps, this time I won't forget to introduce myself. I'm Sandra Petersmann from DW Germany. Could you perhaps shed some light on the proposed BRICS virtual summit on Monday that President Lula of Brazil called for? Okay. Will it happen and will PM Modi participate? Okay. So first, Shivam, on your question regarding SCO Development Bank, which has a mention in the joint statement, in the Tianjin Declaration. At this point in time, or at this stage, we are examining the proposal. Further, in relation to your other part of the question, we don't have any details to share at this point. We've said this before as well. We continue to remain engaged with the US side on trade issues. On Quad Summit, we see the Quad as a valuable forum for discussion among the 4 member countries on shared interests on several issues. The Leaders Summit, as you know, it is scheduled through diplomatic consultations among the member countries, that is among the 4 countries. As far as the Ukraine conflict is concerned, we welcome all the recent efforts establishing
towards establishing peace in Ukraine. We hope that all parties will proceed ahead constructively. India supports an early end of the conflict and the establishment of an enduring peace. That also answers your question, Uma. यूक्रेन के मुद्दे पर आपने देखा होगा कई एक सारी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और दुनिया के अलग अलग लीडरों के साथ. उसके बाद हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है. और जहाँ तक यूक्रेन के हमारा पोजीशन का सवाल है, ये हमने आपको बताया है कि जो भी अभी के एफर्ट्स चल रहे हैं जो वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं. और हमारा ये मानना है कि जो भी पार्टीज़ हैं उसमें इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ. और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत इस बात को सपोर्ट करता है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष चल रहा है, वो ख़त्म हो और वहाँ पर एक चिरस्थायी शांति का वातावरण बने. Ajay, again, I have already answered your question. I have no comments to offer on the latest post that you referred to. Sandra, on BRICS, yes, the Brazilian chair of BRICS, they've called for a virtual meeting. This virtual meeting will happen on 8th. From our side, it will be the External Affairs Minister who will be participating in it. This BRICS summit is at the leaders level. Okay, Kalol and Suhasini. So on India-US relation, we often heard that the relation was based on shared values like democracy, respect for human rights, etc. So what sort of common values do we have with China? What is really the common value that's tying India and China together right now? Suhasini. This is Suhasini Heather from The Hindu. I had two specific questions. One, has India invited the Taliban's acting foreign minister, Motaki, to India and applied to the United Nations for sanctions waivers to bring him here, which has now been refused, as is being reported, and whether that signifies that India is shifting its position on recognition of the Taliban regime in Afghanistan. My second question is, External Affairs Minister Jaishankar spoke at the press conference along with the German Foreign Minister and said he had raised the issue of Ariha Shah's linguistic, cultural, religious rights. It's been 3 years since he said he had spoken to the previous German Foreign Minister about it. We understand that there is still no teacher for the language, for any Indian language for Ariha Shah. It's 3 years later. Has India failed to express or to have the German government completely understand its concerns on the issue? And what kind of action can India take given that it's been 3 years? Jessica. This is Jessica Taneja for DD India. So there was a Bloomberg report which stated that President Xi had sent a secret letter to President of India in March stating that India-US trade deal will be detrimental to Sino-India relations. Can the MEA confirm? Okay. Mukesh. Sir, this is Mukesh Kaushik from Dainik Bhaskar. I'm not insisting that you should comment on Donald Trump, what Donald Trump said about China and India. I'm asking whether India, as a return gesture, would wish President Donald Trump and his terrorist friend Pakistan a long and disastrous future together. Rishabh. So good evening, Rishabh from Times Now. So since IWT is in abeyance, there is flood situation on borders, specifically in the Punjab area. Has India been sharing the flood water situation with Pakistan, and what is the mechanism being used for that? Also, sir, are we looking at any Quad, meeting on the sidelines of UNGA as well, given that leaders from all the 4 countries would be there? Okay, Kalol, on India-China ties, see, we have given you detailed readout of the meetings that have happened. Those readouts, they talk about all the linkages that we have.
the kind of issues that are part of India-China dialogue and discussion. So I would refer you to please have a look at please have a look at the press releases, not just the one that was issued in Tianjin, but apart from that, we also had a press readout of External Affairs Ministers meeting with the Foreign Minister of China. We also had a detailed press readout of SR level talks. So all those will give you, all that forms part of the India-China bilateral agenda at this point in time. Suhasini, your question regarding the proposed visit. As I have said this before also, and you are aware, we have long-standing ties with the people of Afghanistan. We continue to support the aspirations and development needs of the Afghan people. We also continue to have engagements with Afghan authorities. If there is any update on this account, we will surely update you or share with you. On the Ariha Shah case, yes, this was raised when the External Affairs Minister was here. The Foreign Minister of Germany was here. As it was also raised when taken up when External Affairs Minister visited Germany. We have had progress in this matter. We will shortly give you more details on that. But to tell you that the government attaches high importance to this particular matter. We have had consular visits. The embassy has been engaged with her, provided her books. We have arranged temple visits, and we are doing several other things to ensure that her upbringing happens in a cultural environment that is conducive to her and for her full growth and development. So on some of the things that where progress has been made, I will surely inform you on that account. Jessica, your question was on the Bloomberg report. We have seen that report and can confirm that the story of the letter is incorrect. I would also, at the same time, we would urge all our media friends here to exercise due responsibility in your reporting. मुकेश जी, आपके सवाल का जवाब आपका जवाब है वो आपके सवाल में ही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना। जो अभी पोस्ट आया उस पर मेरी जो टिप्पणी मुझे करना था मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर जो आप कल्पना करना चाहे वो आपकी कल्पना जगत की बात है। ऋषभ, we have been sharing high flood data with Pakistan through our diplomatic channels as and when it is required. This sharing of data is happening through our High Commission in Islamabad. On the UNGA meetings, we will let you know as to what sort of program is being scheduled and inform you, give you an update on that at a subsequent time. Divya. Sir, Divya from Indian Express. There was a report last week in New York Times which said that President Trump is not visiting India this year. So in that situation, is India open to having Quad Leaders Summit at another location, or is India okay to reschedule it, or go ahead with a lesser representation or alternative representation from the US? Is there any conversation about this? Thank you. सर, ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से मेरा सवाल ये है कि अमेरिका के फॉर्मर NSA जॉन बोल्टन ने अभी एक बयान दिया है कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते अब ख़त्म हो चुके हैं 50% टैरिफ के बाद। तो क्या लगता है, क्या भारत के रिश्ते प्रभावित हुए हैं ट्रंप की जिस तरह की बयानबाजी हुई है? जैसे रिश्ते पहले होते थे वो अब बदल चुके हैं, ये माना जाए? क्योंकि एक और बात उन्होंने कही है कि भारत अब रूस और चीन के साथ जा चुका है। थैंक यू।
कृष्ण मोहन। सर मेरा सवाल भी कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से, मेरा सवाल भी अमेरिका से है। जेडी वेंस और हमारे पीयूष गोयल साहब दोनों ने कहा कि जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं हमारे अभी ओपन हैं। इस दरमियान एक जिस तरीके से ट्वीट आया है उससे क्या मतलब निकाला जाए, कोई संभावना है अभी या ट्रेड डील जो है बिल्कुल जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? केशव। Thank you, sir. Keshav Padmanabhan from The Print. I have two questions. First is on the recent visit by the German foreign minister, and in his comments in the joint press conference, he said he supports the use of sanctions to pressurize Russia, and there have been secondary sanctions on Indian oil firms. Was this strongly raised, given that in the Tianjin Declaration, which India signed on, there was a clear line saying we do not support the use of unilateral sanctions and economic coercion as statecraft. So can you give us a comment on that? And the second question is there have been reports in Azerbaijan's media that India blocked some sort of application by Baku to the SCO. Can you confirm or deny or state what is India's position with regards to this? Thank you. Last question. नीरज। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए बाढ़ से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। मेरा सवाल यह है कि सिंधु जल समझौता स्थगित है, ऐसे में उच्चायोग के जरिए जानकारी देने का मकसद क्या है, कारण क्या है? Archis, you had a question? Please. Archis Mohan from Business Standard. So in the context of Chinese foreign minister's visit to India, we were given to understand that the Chinese side said that they look into our expectations on supply, restoring supply of critical minerals, tunnel boring machines and fertilizers. Has there been any progress, and are we satisfied with whatever progress there's been on that? Thank you. So Divya, your question is regarding Quad. I would not like to comment on speculative media reports on this issue. As I said, we see the Quad as a valuable forum for discussion on shared interests on number of issues by the member countries. As far as the Leaders' Summit is concerned, this is something that is scheduled through diplomatic consultations among the four partners. देखिए, जहाँ तक टैरिफ का सवाल हो या भारत अमेरिकी रिश्ते का सवाल हो, इन दोनों मुद्दे पे हम लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया है और मैं चाहूँगा कि आप उस स्टेटमेंट को देखें। टैरिफ के मुद्दे पर हम लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा किया है। और जहाँ तक रिश्तों की बात है उसके बारे में अभी मैंने खुलासा किया कि किस प्रकार से हम भारत और अमेरिका के रिश्ते को देखते हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका सवाल भी भारत और अमेरिका को लेके है, रिश्तों से लेके है। यही मैं कहूँगा, हमने कहा अभी कि एक साझेदारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इसमें जो सब्सटेंटिव एजेंडा है उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस बेसिस पे कि दोनों देशों के हितों को रखा जाए और साथ में आपसी दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। Keshav, on Azerbaijan, yes, let me clarify. See, the expansion of SCO is an ongoing process. This year, both Armenia and Azerbaijan, they submitted their application for membership of the SCO. Due to time constraint, a decision on this issue could not be taken by the member states in Tianjin. But this particular issue, that is of the membership of both countries, it remains under consideration by the group. On the other question regarding sanctions, see, as and when there is, yes, of course, we do not, that is not our policy to accept unilateral sanctions, but as and when there are sanctions, we have made statements, including the latest one, when Navarro Energy was sanctioned. So I would like to
request you to please look at those statements. It will clarify where we stand on these particular matter. नीरज, ये जो हम लोग बाढ़ संबंधित जो डेटा हम पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हो रहा है. तभी मैंने कहा कि ये हाई कमीशन के माध्यम से उनको दिया जा रहा है और ये मानवता के आधार पर दिया जा रहा है. We have been sharing high flood data with Pakistan through our High Commission, through our diplomatic channels. This is being done as and when required. First, you've seen the kind of water that is, rainfall that is happening in that part of India and that part of the world. And this is being done based on humanitarian consideration. With that, oh sorry, Archis, your question. Sudhi, you had a question? Badaiye. So, Shruti Ranjan sir, if you could give us an, I mean, we have seen a lot of comments on the H-1B visa coming from the United States, some even calling it a scam that Indian companies have been running. Is there a, response or a statement that you would want to give, sir? So first, Arjis, your question on the economic issues that you mentioned, there has been progress on some of the restrictions that were there. They have been lifted, and hopefully we'll see more progress in the future. On H-1B visa, look, Sudhi, mobility partnership between India and the United States is an important pillar of this relationship. It supports our technology collaboration, it supports our economic collaboration, it supports several other things that are happening in the space of innovation, new emerging technologies, financial collaboration. We value it, and it is something that brings mutual benefit to both sides. While it creates space for our skilled people to work in the United States, it also adds a lot of value to the competitiveness and productivity of American enterprises. It is something that is in mutual benefit. We continue to engage with the United States on mobility issues and see how best we can drive this partnership. So with that, ladies and gentlemen, yes, Ajay. The Assembly is slated 3 weeks from now. Anybody from India will be representing India at the UN General Assembly? Yes, each year we have Indian delegation participating in UN General Assembly. This year again we'll have an Indian delegation going there. As to who will be leading it, we'll let you know in due time on our participation. Ladies and gentlemen, thank you very much for your participation. Good afternoon, friends. Let's begin our conversation. Welcome to this press conference. With that, the floor is open.
Before that, sorry, before I open the floor, I have an announcement to make. So let me first make the announcement. This is about the visit of the Prime Minister of Mauritius to India. The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgulam, will undertake a state visit to India from 9 to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ramgulam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ramgulam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ramgulam, he will, apart from Delhi, he'll also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he'll be attending a business event. More details of the visit you can see in the press release that we are going to issue shortly. So with that, now I open the floor for questions. सर कादम्बिनी शर्मा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अभी कुछ ही मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, एक पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर. उन्होंने लिखा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप. इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया. ओके, सिद्धांत. Hi sir, I'm Siddhant from Vion. Sir, on 31st of August, we saw massive protests in Australia and they singled out Indians. The posters said that there are more Indians coming to Australia than Greeks and Italians. What do you have to say, your reaction to it, and essentially Indians being singled out in Australia? Okay. Madhu. सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से. जैसा कि अभी अभी ट्रू सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अब उनके हाथ से निकल चुका है और वो चीन और रूस के साथ जा चुका है. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि चीन के साथ भारत के संबंधों को देखें अगर पीएम के विजिट के बाद, तो क्या कोई बॉर्डर टॉक्स को लेकर आगे बढ़ती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, और क्या कोई संभावनाएं दिख रही हैं कि भारत और चीन के जो सामरिक संबंध हैं वो पटरी पर लौटेंगे? प्रणय. सर, अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान. प्रणय उपाध्याय हूँ, इंडिया टुडे आज तक से. और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं. एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब. तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ जॉइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के साथ चल रही हैं. इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? ओके, आयुषी. So this is Ayush from ANI. The Prime Minister of Nepal, during a meeting with Chinese President Xi in Tianjin, has once again objected to India restarting trade through the Lipu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections? Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है. इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ. सिद्धांत, योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट्स दैट वी सॉ इन ऑस्ट्रेलिया. वी ऑल आर अवेयर दैट एंटी